जय हिंद दोस्तों। हेलो एवरीवन, दिस इज जयेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू पीपल लाइक आवर लास्ट वीडियो जो हम लोग खोपोली राइड पे गए थे। अगर नहीं देखा है तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करो। सो आज का वीडियो अगेन अ यूनिक वीडियो। वी गोना सी अ कंपैरिजन ऑफ स्टॉक एग्जॉस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल GT 650 एंड माय Hyosung GT 250R। इसका नाम हवाई है फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड राहुल ने इसका नाम टकीला रखा है। सो हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग स्टॉक का कंपैरिजन करेंगे, बिकॉज दोनों भी ट्विन सिलेंडर गाड़ी है। ये 650 है, आई नो, मतलब ज़्यादा कोई कंपैरिजन नहीं है, पर 2 सिलेंडर होने के कारण वी कैन कंपेयर द एग्जॉस्ट साउंड। सो पहले एग्जॉस्ट सुन लेते, कम क्लोन भाई। तो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, मैं पहला मेरे हवाई का इंजन स्टार्ट करता हूँ और आइडल पे रखता हूँ, रेव नहीं करूँगा। उसके बाद ऑफ करके विल सी, हाँ मतलब राहुल के बाइक का साउंड कैसा है, तो यू पीपल कैन रिकॉग्नाइज। सो लेट्स गो। साउंड इन आइडल मैंने रेव नहीं किया है, सो आई विल पुट द इंजन इग्निशन ऑफ करता हूँ। अभी राहुल के गाड़ी का स्टॉक मतलब आइडल पे आवाज़ सुनते हैं। स्टार्ट कर भाई। ओके, सो यू कैन सी राहुल बिल्कुल रेव नहीं कर रहा है। दिस इज द आइडल साउंड। तो आपको पता ही चलता होगा साउंड में कितना डिफरेंस है। अभी ऐसा इतना अच्छे से पता नहीं चलेगा, अभी एकदम एक्सट्रीम रेव करके देखते हैं कि एग्जैक्टली साउंड में कितना डिफरेंस है। ओके, इग्निशन ऑफ किया। सो नाउ आई विल स्टार्ट माई हवाई एंड लेट्स सी एक्सट्रीम में कितना आवाज़ आता है, और वापस आई विल ऑफ माई इंजन एंड राहुल विल डू द सेम थिंग। सो या लेट्स स्टार्ट द इंजन। मैं 5 सेकंड के लिए एक्सट्रीम रेव करके रखूँगा तो मतलब समझ में आएगा कि क्या साउंड है, और राहुल विल ऑल्सो डू द सेम। सो लेट्स गो, 1 2 3। अभी राहुल के बाइक का साउंड सकते सेम, मतलब जो मैंने किया राहुल विल डू। तो देखते क्या मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है साउंड। ओके, डू इट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आता होगा कि किसका साउंड ज़्यादा है। राहुल, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा ज़्यादा है? दैट्स व्हाट मुझे भी यही लग रहा है। जब रेव कर रहे हैं हम लोग, मतलब फुल एक्सट्रीम रेव कर रहे हैं, तो इसका साउंड ऑब्वियसली 650 सीसी इंजन कैपेसिटी बड़ा है। और जब आइडल में रहता है, मतलब यूजुअली भी स्टार्ट द इंजन आइडल में होता है, तो इसका मतलब थोड़ा सा बेस ज़्यादा आता है। तो ये सीन है। एंड एकदम शॉर्ट वीडियो था गाइस, लेट मी इन द कमेंट कैसा लगा। एंड इफ यू न्यू टू चैनल देन स्टे सब्सक्राइब। टिल देन दिस इज जय शेयर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। हाँ तो कर ले नहीं, ये कर लो पहले। Hello everyone, this is Jay and welcome back to my YouTube channel. So, welcome back to my YouTube channel. तो आज हम लोग फ्रेंड्स से मिले थे टुगेदर एंड आई थॉट कि वील मेक वन। तो फर्स्ट हम लोग ऐसे ही मतलब एकदम न्यूट्रल चैनल, तो आज हम लोग ऐसे फ्रेंड्स मिले थे, लाइक एक छोटा सा राइड भी करना था। एंड यू कैन सी वी हैव अ कॉन्टिनेंटल